Assalamualaikum, VMware vSphere Data Center Virtualization Batch 1 सेशन नंबर 20 स्टार्ट हो चुका है. दिस इज 7th वीक और आज 7th वीक का सेकंड सेशन है. आज सैटरडे है 12 नवंबर 2022 और ये हमारा है सेशन नंबर 20. तो आज के सेशन के साथ ही 20 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे और कल संडे को 13 नवंबर 2022 को हमारा 21 नंबर सेशन होगा. उसके साथ ही 7 हफ्ते इस कोर्स के कंप्लीट हो जाएंगे. तो वही से कंटिन्यू करते हैं. देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा था 253 स्लाइड तक, तो यही से हम कंटिन्यू करते हैं. तो उससे पहले हम सर्वर को ऑन करते हैं. सर्वर रेडी हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं. अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे सेशन 19 तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, तभी आप आज के लेक्चर को समझ पाएंगे. तो मैं सर्वर का एक्सेस लेता हूँ, फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं. 253 स्लाइड तक हमने पढ़ा था, वही से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने छोड़ा था. बस सर्वर थोड़े ही टाइम में रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे की तरफ. तो लेट्स वेट फ्यू सेकेंड्स. तो फाइनली the server is ready now. You can also choose the language, like I have selected English. So you can also have tech help and live chat and support options and tips, user guide, PDF as well, and about. Let me again take the server access because it's not working properly. So let me take access of server again. Maybe it will work now. It will respond fastly now. Let's wait few seconds. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. सर्वर का एक्सेस लेने वाले हैं, थोड़ा ही टाइम लगेगा अभी. Let me start the server. Or finally, it's gonna be ready. It's loading too much. You can just wait or cancel or restart or reload or start the server again. Nothing else we can do. It depends on the server, on the network, that how much fast we can access the server. No depending on me. You know already. Now I think it will work. Yes, finally it's gonna be ready.
Yes, finally. Checking status of the server. Checking status of the server. The data center site. And just checking status. Don't know why it's not proceeding further. It should proceed. It should proceed. But again, it just stopped working. It's just saying. So that's why I have reloaded it again and start the server again. Hope it will work now without any delay because too much time I wasted so far now. Finally, it's gonna be ready, I think. Yes, yes, finally. Finally, it's ready. So server is ready finally. हमारा server ready हो चुका है. तो let's start now. टेबल ऑफ कंटेंट्स में आती मॉड्यूल 2 में कौन से लेसन में थी सेकेंड वाले लेसन में इसमें कहाँ पर थी let me check where we were can also check in the previous lecture as well. Where is the previous lecture? Here it is, session number 19. Let me check. Then specify by percentage, which is all group security. Yes, yes, yes. All group security. Where it is? Yes, here it is. All group security. Only 52. You covered up to 252. तो हमने ये पोर्ट ग्रुप सिक्योरिटी तक पढ़ा था और आज से हम यानी हमने 252 स्लाइड तक पढ़ा था पोर्ट ग्रुप सिक्योरिटी तक कल और हमने ट्रैफिक शेपिंग का कहा था कि हम सेशन नंबर 20 में ट्रैफिक शेपिंग से पढ़ाएंगे आपको सही ना 253 स्लाइड से तो दिस इज 253 नंबर स्लाइड ट्रैफिक शेपिंग वो टॉपिक इन द लेसन 2 तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले सेशन 20 फाइनली सर्वर रेडी होने के बाद आप अपने एडजस्ट उठाइए नोट्स बनाना स्टार्ट करिए अभी से traffic shaping. But before this, let me take the vSphere client access because we have to work on these topics particularly on the vSphere client. So I need the access of vSphere client in my web browser. So let me take the access. Right double click on the web browser, Google Chrome, click on the vSphere web client bookmark, and now check this option use Windows session authentication and click on login. So finally we have access to vSphere client software. And now we are ready. But VM network edit settings here it is I think on A6-01 and configure networking virtual switches and our topic was to edit the existing switch and हमने क्या करना था एक edit करना था एक existing virtual standard switch को जो पहले से मौजूद है उसको हमने edit करना था edit किए अपलिंक इसके साथ कनेक्ट है इस पोर्ट ग्रुप के साथ VM नेटवर्क और हमने कल ये भी सीखा था ना कि आप कैसे क्या कर सकते हो एक एक बार मैं तो
मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने आपको सिखाया था ना कि एडिट में जाकर आप इसको एडिट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी कल, अगर आपको याद हो। ए नेटवर्क में आप क्या कर सकते हो, आप एक नया अपलिंक जो है ना वो फिजिकल नेटवर्क एडेप्टर आप क्या कर सकते हो, आप अटैच कर सकते हो। जिसके दो फायदे हैं, एक ही कि थ्रूपुट अच्छा होगा, और दूसरा क्या फायदा है कि आपके पास रिडंडेंट पाथ मौजूद होगा इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्टिव फिजिकल नेटवर्क एडाप्टर। तो आप एग्जिस्टिंग स्विच पे रहेंगे और नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आप एक प्लस के बाद क्या करेंगे, एक नया अपलिंक आप ऐड कर देंगे। जैसे ये हमारे पास ये वाला मौजूद है VM3, तो हमारे पास अब दो हो गए हैं, दोनों एक्टिव में है। ये देखिए, अगर आप एक को स्टैंड बाय में इस तरह कर देते हैं तो फिर क्या होगा, अगर आप एक को स्टैंड बाय में रख दे रहे तो फिर क्या होगा, वो रिडंडेंट लिंक के तरह काम करेगा। यानी अगर ये एक्टिव वाला फेल हो गया तो फिर रिडंडेंट वाला जो है ना स्टैंड बाय वाला, वो एक्टिव हो जाएगा। और अगर दोनों का आप ट्यूनिंग करते हैं ना एक्टिव के अंदर, तो फिर क्या होगा, वो स्पीड डबल हो जाएगा, थ्रूपुट अच्छा होगा। यानी जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा तो सक्सेसफुली वो मूव होगा विद इन लेस टाइम। तो दो किस्म के फायदे हैं अपलिंक यानी फिजिकल अडेप्टर ऐड करने के, जो आप वर्चुअल स्टैंड के साथ अटैच करते हैं। तो देखिए, आप इस तरह इसमें आ सकते हो, ये अब स्टैंड बाय में है। अगर मैं एक्टिव में रखना चाहिए तो मैं ऊपर जाऊंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करें, और फाइनली रेडी टू कंप्लीट। आपने सेलेक्ट कर लिए, दो पहले एक मौजूद था, आप देखिए अब दो दूसरा भी मौजूद हो गया। 10,000 का स्पीड दे रहा है, 10,000 है तो 20,000 होगा टीम में। अगर इस टाइम पर में होता है तो पहले ऐसे रिडेंडेंट नहीं काम करता, अगर ये फेल हो जाता है तो पहले आता है। अगर ये दोनों एक्टिव में तो पहले टीम में इनका दोनों का स्पीड डबल हो जाता है, थ्रूपुट पर अच्छा होता है ना। जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह सक्सेसफुल मूव होते हैं तो उसे थ्रूपुट कहते हैं ना, जो विद इन लेस टाइम हो। ईवीएम नेटवर्क हमारे पास एक पोर्ट ग्रुप है और जो स्विच जीरो का विलियन आईडी इसके जीरो है, और उसमें एक वर्चुअल मशीन कनेक्टेड है इस पोर्ट ग्रुप के साथ। तो ये कि ये अपलिंक है, क्यों, क्योंकि फिजिकल अडेप्टर वर्चुअल स्विच के पोर्ट ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। अब हमने वर्चुअल स्विच में एडिट में जाना है, क्योंकि हमने सीखना है हाउ टू एडिट एग्जिस्टिंग वर्चुअल स्विच। सिक्योरिटी हमने पढ़ी थी कल, आज हम पढ़ेंगे ट्रैफिक शेपिंग। चलिए इसे समझते हैं। Just like in the security settings, you can override the default policy set at the switch level to apply to just this port group. क्या मतलब ये कि ये जो आप सिक्योरिटी करते थे ना, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये promiscuous mode make address changes forward transmits और ये ट्रैफिक शेपिंग वगैरह, तो ये आप सोक और नो यानी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वाले लोगों से मिलकर यहाँ पे इस चीज़ों में चेंज लाएंगे, आप अकेले इसमें नहीं ले सकते, सही ना। तो क्योंकि इस चीज़ों में उनका अमल दखल होता है ना, हमारा इतना नहीं होता, सही। और ये देखिए, ये एडिटिंग हम किस लेवल पर कर रहे हैं, स्विच लेवल पर। अगर आप ऐसा नहीं चाहते ना कि मैं स्विच लेवल पर एडिटिंग नहीं करना चाहता, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर एक पोर्ट ग्रुप जो है ना, जो वो जो स्विच के अंदर है डिफरेंट पोर्ट ग्रुप होते हैं ना, तो आप पोर्ट ग्रुप लेवल पर भी एडिट करते सकते हो सेटिंग्स को। वही चीज़ें हैं, सही है ना, मगर वो पोर्ट ग्रुप लेवल पर होगी, और अगर आप जनरली करेंगे तो फिर वो सारे पोर्ट ग्रुप्स पर होगी, सारे स्विच पर होगी। देखिए, नजर आ रहा है ना। A traffic shaping policy is defined by average bandwidth, peak bandwidth, and burst size. You can establish a traffic shaping policy for each port group. वही बात की, आप ट्रैफिक शेपिंग पॉलिसी जो है ना, तीन किस्म की होती है। क्या, एवरेज बैंडविड्थ, पीक बैंडविड्थ और बर्स्ट साइज। तो आप ये पोर्ट ग्रुप लेवल तक कर सकते हो, जैसे हमारे पास वी नेटवर्क पोर्ट ग्रुप है, हम उस लेवल तक भी कर सकते हैं। यानी मैं आपको प्रैक्टिकल भी कहूँ ना, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए जरा, ये क्या है, वी स्विच जीरो वर्चुअल स्टैंड स्विच है ना। तो अगर मैं इस मिनट में जाऊँ और ट्रैफिक शिपिंग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करूँ तो क्या होगा, एवरेज बैंडविड्थ, पीक बैंडविड्थ,
बस साइज ये सारे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मगर ये होगा स्विच लेवल पर। स्विच लेवल का मतलब ये है कि स्विच में जितने भी पोर्ट ग्रुप है ना, तो सारों पर ये अप्लाई होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि सारों पर अप्लाई ना हो, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये पोर्ट ग्रुप है, दो तीन और है, तो उन पर अप्लाई ना हो, सिर्फ इस पर अप्लाई हो। तो अगर स्पेसिफिक पोर्ट ग्रुप पर अप्लाई करना है तो इसमें एडिट सेटिंग में जाइए, आप फिर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो उस बात का यही मतलब। देखिए ट्रैफिक शेपिंग, अब वही ऑप्शन है कि एवरेज बैंडविड्थ, पीक बैंडविड्थ और बर्स्ट साइज। E6i shapes outbound network traffic on standard switches. Traffic shaping restricts the network bandwidth available on the port but can also be configured to allow bursts of traffic to flow through at high speeds. Average bandwidth क्या होता है, peak क्या होता है और burst size. Average का मतलब है establishes the number of bits per second to allow across a port average. Over time, this number is allowed average load. Peak bandwidth का क्या मतलब कि maximum number of bits per second, what maximum number of bits per second to allow access a port when it is sending or receiving a burst of traffic. This number limits the bandwidth that the port uses when it is using its burst bonus. Burst size, maximum number of bytes to allow in a burst. If this parameter is set, a port might gain a burst bonus if it does not use all its allocated bandwidth. When the port needs more bandwidth than specified by the average bandwidth, it might be allowed to temporarily transmit it at a high speed if a burst bonus is available. This parameter limits the number of bytes that have accumulated in the burst bonus and transfers traffic at a higher speed. No changes are needed here. Checking, clicking, teaming, and फैलावर एंड यहाँ पर कोई आप चेंजेस मत कीजिए, जैसा है वैसा ही रहने दे। क्यों? वही बात जो मैंने आपको हजार दफा समझाई कि इसमें स्विच के अंदर या स्विच के ग्रुप के अंदर जो आपने चेंजेस लानी है ना, तो विस्फीयर में हम नेटवर्किंग पढ़े हैं ना, तो स्विच भी नेटवर्किंग में आता है। तो ज़ाहिर अपनी नेटवर्किंग टीम के साथ बैठ कर ही क्या करना है, ये सारी चीज़ें चेंज करनी है, आप खुद नहीं कर सकते, सही है ना। और सिक्योरिटी की बात हुई तो वो भी आप सोक टीम यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ें आप डिसाइड करेंगे, आप अकेले ये नहीं कर सकते। इसलिए हम इसे रहने देते हैं। ऐसा इन्होंने बताया कैसे रहने दें, इसे स्किप करें। VMware की तरफ से ऑफिशियली हमें बताया गया है। अगर आपको सबूत चाहिए तो देखिए, नो चेंजेस आर नीडेड हियर एंड यहाँ पर कुछ चेंजेस मत करें, जैसा है वैसे रहने दें। देखिए ट्रैफिक शिपिंग को देखिए ना, इन्होंने भी ऐसा कहा है कि जैसा है इस तरह इसे ही रहने दें। और फिर क्या कहा है कि क्लिकिंग टीमिंग एंड फेलोवर के दूसरे ऑप्शन की जानब बढ़ो जिसका नाम है टीमिंग एंड फेलोवर। तो वही बात प्रूफ हो गई जो मैंने भी कहा और वेमवेयर ने ऑफिशियली तौर पर भी कहा कि आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आप उनके साथ सब अन्य टीम के साथ बैठकर ही डिसाइड करेंगे मुश्तरका टीम के अंदर। टीमिंग एंड फेलोवर, ये बात हो रही है टीमिंग की, जो आप मल्टीपल नेटवर्क अडाप्टर्स जो है ना फिजिकल यानी अपलिंक उसको साथ में एक तो में मिला देते हो, जो थ्रूपुट पे अच्छा होता है। और फेलोवर, फेलोवर का मतलब है कि मैंने आपको बताया ना कि रिडंडेंट पाथ, यानी फॉर एग्जांपल आपका एक निक दोनों एक्टिव है ना, एक क्या हुआ, सॉरी एक एक्टिव है एक स्टैंड बाय, अगर एक फेल हो गया फेलोवर हो गया, तो दूसरा नेक्स्ट स्टैंड बाय से एक्टिव में आ जाएगा, तो ये फेलोवर के लिए भी अच्छा हुआ ना। अब यहाँ पर एक बात है, मैंने आपको बताया ना कि जब आप फिजिकल एडेप्टर जो है ना यानी अपलिंक आप वर्चुअल स्विच के साथ मल्टीपल कनेक्ट करते हो, तो इनका दो किस्म का फायदा है, एक ये थ्रूपुट, एक है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब फेल ओवर, यानी अगर आप एक फेल हो जाए और दूसरा स्टैंड बाय में है तो एक्टिव हो जाएगा। टीमिंग का मतलब है टीमिंग यानी थ्रूपुट अच्छा होगा ना, जब मल्टीपल लिंक आप कनेक्ट करते हो वर्चुअल स्विच के साथ, तो जब डेटा फिजिकल नेटवर्क में जाएगा तो फिर वो सक्सेसफुली मूव होगा विद इन लेस टाइम, क्योंकि नेट टीम में हुई होगी। यानी निक जो है ना फिजिकल वो मल्टीपल होंगे आपस में, स्पीड डबल हो जाएगा यानी जेर हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसलिए डेटा तेजी से पहुंचेगा, थ्रूपुट अच्छा होगा। तो थ्रूपुट और रिडंडेंसी यानी दोनों क्या चीज़ें, टीमिंग एंड फेलोवर, ये सारी एक ही चीज़ है। टीमिंग का मतलब है टीमिंग यानी थ्रूपुट अच्छा होगा ना, जब मल्टीपल लिंक्स वर्चुअल स्विच के साथ कनेक्ट होंगे। फेलियर का क्या मतलब कि वही बात की रिडंडेंसी, एक स्टैंड बाय में है एक एक्टिव में, अगर एक्टिव वाला फेल ओवर हो गया तो फिर स्टैंड बाय वाला एक्टिव हो जाएगा। तो ये आपके पास रिडंडेंसी हो गई। तो दो किस्म के फायदे हुए जब आप एक अपलिंक मल्टीपल अपलिंक्स को आप एक वर्चुअल स्विच के साथ कनेक्ट करते हो, सही है, इसका यही मतलब। Again, we have the option to override the default virtual switch settings. Load balancing policy. The load balancing policy determines
How network traffic is distributed between the network adapters in a NIC team. वही बात जो मैंने कही vSphere virtual switches load balance only the outgoing traffic. यानी ये लोड बैलेंस कब होता है जब डेटा जो है ना वो अंदर से बाहर जा रहा होता है फिजिकल नेटवर्क में जा रहा होता है वर्चुअल से फिजिकल यानी वीएम एक फिजिकल मशीन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं यानी वीएम से डेटा आउट होके फिजिकल मशीन तक जा रहे हैं तो तब लोड बैलेंस होता है कब जब आपके पास मल्टीपल अडेप्टर जो है ना फिजिकल अपलिंक्स वो वर्चुअल स्विच के साथ अटैच्ड हो इनकमिंग ट्रैफिक इज कंट्रोल्ड बाय द लोड बैलेंसिंग पॉलिसी ऑन द फिजिकल स्विच और इनकमिंग ट्रैफिक जो है ना वो कौन कंट्रोल करता है लोड बैलेंसिंग पॉलिसी होती है वहाँ पर फिजिकल स्विच पर तो वहाँ पर क्या होता है इनकमिंग ट्रैफिक का कंट्रोल होता है कि फिजिकल से जो वीएम पर डेटा जाएगा तो वो फिजिकल स्विच पर ही डिसाइड होता है कि लोड बैलेंसिंग पॉलिसी क्या होगी और लोड बैलेंसिंग पॉलिसी वर्चुअल स्विच पर तब डिसाइड होती है जब आउटगोइंग ट्रैफिक की बात आए कि एक डेटा वीएम से लेकर फिजिकल मशीन तक जाए routed based on the originating virtual port. Selecting an uplink based on the virtual port IDs on the switch. After virtual switch selects an uplink for a virtual machine or a VM kernel adapter. It always forwards traffic to the same uplink for this virtual machine or VM kernel adapter. Route based on IP hash, select an uplink based on the hash of the source destination IP address of each packet. For non-IP packets, the switch uses the data at two scales to compute the hash IP. Teaming requires that the physical switch is configured with Ethernet channel. Route based on the source MAC hash. Select an uplink based on the hash of the source Ethernet route. Route based on a physical या पर सर्वर आई थिंक कुछ मसला है पता नहीं सर्वर में क्या मसला है I think I should reload. So let's wait. Let's start the live now. Login with my VMware ID. यानी मेरी जो VMware की आईडी है उससे मैं लॉगिन ले रहा हूँ आईडी का मतलब आइडेंटिफिकेशन यानी VMware मुझे कैसे आइडेंटिफाई करता है मेरे अकाउंट के जरिए तो वो अकाउंट के क्रेडेंशियल्स देकर मैं लॉगिन हो सकता हूँ तो मैंने वो दे दिए अब मैं लॉगिन होने जा रहा हूँ तो लेट्स वेट नाउ VMware Cloud Services मैंने साइन इन के लिए क्रेडेंशियल दे दिए जी मेरा पासवर्ड यानी ईमेल अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब स्टार्ट होता है कि नहीं तो फाइनली इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड नाउ it's not responding don't know why what can be the reason not network issue because if there is network issue then no network issue अगर नेटवर्क इशू होता तो फिर वहाँ पर ये मैसेज ज़रूर आता कि नेटवर्क
डिस्कनेक्टेड या स्लो नेटवर्क कनेक्शन इस तरह कुछ आता। अगर नहीं आया तो उसका मतलब है कि डेटा सेंटर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। आप सेशन 3 देखिए ना, उसमें मैंने आपको बताया इस चीज़ के बारे में 1 घंटा मुसलसल की VMware ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली है जिसके बिना पर आपको सर्वर एक्सेस करने में हर रोज़ मसला हो सकता है ना। वो कुछ दिन भी आपको सर्वर डाउन करा सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने डाली, मैंने आपको बताया था सेशन 3 में, आपको देख सकते हैं उसके लिए रिस्ट्रिक्शन जाने के लिए कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है। तो उसकी वजह से इस दिन भी वो सर्वर डाउन करा सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास फ्री सर्वर्स हैं अवेलेबल है। तो फ्री की तो आपको पता है उनकी मर्जी के जब हमें डाउन करना चाहे, जब आप करना चाहे, तो इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम इसमें हर रोज़ आता रहता है। कल भी आपको पता है ना कि स्टार्टिंग 20 मिनट सर्वर वीडियो होने में लगे थे सेशन 19 के। तो ये तो होता रहता है ना। इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाली है अपने पास, और भी रिस्ट्रिक्शन है ना। अगर आपने वो समझना है तो सेशन 3 देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं सिर्फ सर्वर का इंतजार कर रहा हूँ कि वो रेडी हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हमने छोड़ा था। पता नहीं ये क्यों। I'm trying again and again, but depending on the server and network as well. But the network signals are full on my side. Don't know what's the problem. आप लोग वैसे ना कि खुश हो जाए कि देखिए आज का लेक्चर छोटा हो जाएगा। सर कह रहे होंगे कि देखिए सर्वर रेडी नहीं हो रहा, तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है काफ़ी यानी। तो आप सोचेंगे सर सर जो है ना ये कम कर देगा आज का क्लास, 30 मिनट 40 मिनट कर रखते हैं 2 घंटे के बजाय। तो हम भी खुश हो जाएंगे कि ये देखिए आज का लेक्चर तो कम हो गया है, और नहीं तो बहुत बड़े लेक्चर्स होते हैं। आप सोचेंगे कम से कम आज का लेक्चर तो 2 घंटे नहीं हुआ ना। ऐसा ना हो कि आप सर्वर रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से खुश हो गए, क्योंकि आप सोचेंगे कि देखिए आप सिर्फ बिजाती कर रहे हैं ना कि 2 घंटे 10 दिन पढ़ा रहे हो, सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है, तो पढ़ा नहीं रहा है ना। 2 घंटे तो उसको पढ़ाना होता है ना। तो जाहिर है ये बात भी आप लोग की सही है, आप सही सोच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 घंटे बैठे रहा हूँ ना, सर्वर एक्सेस ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों का भी। तो क्लास का मकसद तो नहीं होता है ना कि 2 घंटे में हम सर्वर एक्सेस करने का इंतजार करें। जाहिर है फिर हमें अगर इंतजार करेंगे टाइम वेस्ट होगा, तो फिर क्या मतलब है, देखिए सर्वर की तरफ से प्रॉब्लम है। तो जाहिर है अगर एक्सेस नहीं मिलेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो 2 घंटे तो हमें सिर्फ एक काम कर लेना। अगर नहीं होता तो पर मजबूर हमें 20-30 मिनट में लेक्चर वाइंड अप करना होता है ना। 2 घंटे पर नहीं हो सकता। और ज़रूरी नहीं है कि हम 2 घंटे हर रोज करें, क्योंकि हम काफ़ी तेज जा रहे हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात कि आखिर हम कल कर लेंगे, वैसे भी हम तेज जा रहे हैं। तो आप भी थकेंगे नहीं कि देखिए हर रोज़ 2 घंटे सेशन होता है, कभी कभार आधे घंटे का भी हो जाएगा। तो आप भी हेल्दी रहेंगे, देखिए कि हर रोज़ 2 घंटे तो नहीं होता ना, आप खुश हो जाएंगे। वैसे खुश होने की बात है भी आप लोगों के लिए कि आप एग्जाम छूट जाएगी कि देखिए आज तो कम से कम छोटा सेशन देखने को मिला ना, हर रोज़ 2 घंटे का होता है। तो फिर ये आप लोग एंजॉय करें, क्योंकि सर्वर तो एक्सेस होने का नाम नहीं ले रहा, और 2 घंटे वैसे वेस्ट हो जाएंगे, आप लोगों को पता है काम नहीं हो पाएगा। तो अगर कल सर्वर रेडी हुआ, सही हुआ, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी देर से, कल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आज भी बहुत ज़्यादा है।
आज तो स्पून होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फिर आप इंजॉय करें। 1 घंटा 30 मिनट आपका ब्रेक हुआ, यानी आपने आज क्लास नहीं लिया प्रॉपरली, जितना लिया उसे बस समझे और वही से हम कंटिन्यू करेंगे कल। तो सॉरी फॉर दैट, बट सर्वर साइड प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। अल्लाह हाफिज़।